Everyone says you need a co founder, you need seed funding, you need fancy Excel sheets. I had none. All I had was fire in my gut. So let me guess, you must have watched 50 some reels, saved sales strategies on LinkedIn, and God knows done what all. But your business is still not moving. Do you really understand why? I'll explain you today in this video. मैं अपना सच बताता हूँ that how back in the days I built 1 crore rupee monthly business with no MBA, no VC, no unicorn dreams. सिर्फ एक crazy obsession कि मुझे लाइफ में किसी की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है and I mastered that which generated this kind of business for me. And today in this video I will exactly tell you how you can also do that. No fancy, nothing fluff, real stuff. No flash, only fire. You know something that you have been lied to. आपको बोला गया पिच डेक बनाओ, फंड रेस करो, रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब आप फंड रेस करोगे. बट किसी ने भी ये नहीं समझाया दैट यू नीड टू सॉल्व समबडीज रियल लाइफ प्रॉब्लम. मैंने एक प्रॉब्लम पकड़ी, उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व किया, कंसिस्टेंटली सॉल्व किया और ऐसे सॉल्व किया जैसे कोई और नहीं कर सकता. That is what helped me building this business, and that is what helped me generating that kind of revenue per month. When I started my business, my story was very different. There was lot of noise. वो एक ऐसी दौड़ थी जहाँ लोग प्रोडक्ट खेल रहे थे. And I tried to understand that what can I sell apart from selling a product. I figured out that अगर मैंने किसी एक कस्टमर की कोई पेन या कोई नीड या कोई डिज़ायर अगर सॉल्व कर दी तो मेरा बिजनेस चल जाएगा. उस टाइम पे इंडिया में होम ऑडियो के नाम पे सिर्फ दो ही ब्रांड्स हुआ करते थे, फिलिप्स एंड सोनी. सो देयर वाज नथिंग एल्स that was actually solving a problem of a music fanatic or solving a problem of an audiophile. Audiophile वो बंदा होता है जिसको म्यूज़िक से प्यार होता है. उसको अगर प्रोडक्ट चाहिए और उसकी जेब में अगर सोनी और फिलिप्स जितने पैसे नहीं हैं तो वो कैसे प्रोडक्ट खरीदता. वो प्रॉब्लम सॉल्व करी मैंने एंड माई लाइफ चेंज्ड. And then we built a system around it which was creating a wow element for all our customers at every single point. And we did not need funding. We wanted focus and consistent focus on making my customer happy. So I created a framework which consisted of three things primarily. Let me explain all three of them to you. Number one was customer obsession and not product obsession. जब वो मार्केट प्रोडक्ट खेल रही थी, मैं कस्टमर खेल रहा था. मैं समझना चाहता था कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली डज माय कस्टमर नीड. एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स which satisfied need of my customer. It was solving some of his problem. लोग उस रेस में लगे हुए थे where they were getting the best possible price every time they were launching or relaunching the product. I was trying to launch products which were satisfying needs of my customer irrespective of what was the price. So if you don't understand your customer deeply, आप सारी जिंदगी सिर्फ प्राइस और डिस्काउंट का ही खेल खेलते रहोगे. Now number 2, डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर स्केल. मैंने क्या फोकस किया कि मैं पहले अपने एक 10 कस्टमर्स को फ़ैन बनाऊं और उन 10 को देखूं मैं 100 तक कैसे लेके जाऊं. देन आई क्रिएटेड दोज 100 एंड आई क्रिएटेड सिस्टम्स एंड आई क्रिएटेड द इंटायर फनल टू टेक दैट 100 to 1000. So distribution to first 10 was so important to scale it to 1000. Number 3, create one massive system and duplicate it. Instead of creating 10 mediocre funnel, एक ऐसा funnel create करो जो hit हो जाए. And once that is hit, छाप दो उसको, duplicate कर दो. One follow-up system, one sales system, one lead generation system, one customer happiness system, one customer satisfaction system. जो चीज़ चल रही है उसको duplicate करो और छाप दो. ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. You need one offer, one system and one source of truth. That's how I did it. And if I can do it, you can also do it. Not because I am special, but because I stopped listening to the noise and I focused on clarity that I had in mind. I focused
कि मुझे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आई फोकस्ड कि मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, आई फोकस्ड मुझे अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, आई फोकस्ड कि मुझे अपने लिए क्या क्रिएट करना है. You don't need big drama, you don't need investor decks, you don't need seed funding, you don't need VCs, you don't need unicorns to build this kind of business or to build any business, small or big. You just need one thing, that you need to solve somebody's problem. दिल से, शिद्दत से, फोकस से, कंसिस्टेंटली किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और उसको बिजनेस बना लो. आप देखो क्या मैजिक होता है. इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड समथिंग, यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड, यू वांट माय हेल्प, you want to discuss something with me, I'll be more than happy to help you. Also, I create such content because I want to create winners in this life. I want people to win. So do subscribe to the channel, like the video, share it with people who will benefit out of it. And if you need my help anywhere to build your 1 crore rupee month business, just message or email me. I will personally get in touch with you. Looking forward. Until then, it's your friend Sumit Khubchandani.